everyone, and welcome back for another important PYQ session. PYQs, as I said, very important so that you can understand what kind of questions appear in the exam, which topics are important, and accordingly you can prepare yourself. And also identify weaknesses. कि कौन सा topics मेरे खराब है, कैसे type के questions मेरे से नहीं हो रहे, and accordingly you can prepare yourself to ace the exam. Today we will be discussing some PYQs, previous year questions from the human digestive system and the excretory system. All right. So let's start. The first question, match the following. The first list contains a list of molecules, and the second list contains that after the digestion of these molecules, what is the product that we get? When these molecules are broken down, what are the products that we get? So list 1 has proteins, carbohydrates, nucleic acids, and lipids. List 2, nitrogenous base and pentose sugar, fatty acids and glycerol, monosaccharides, and amino acids. Now, proteins are long chain amino acids. Many amino acids they come together and form a long chain, and the long chain of amino acids is known as proteins. On the other hand, carbohydrates are long chain polysaccharides. Polysaccharide means nothing but a huge unit of monosaccharides. Many monosaccharides come together. If two monosaccharides come together, it forms a disaccharide. And if many monosaccharides come together, it forms polysaccharide, which are nothing but carbohydrates. So carbohydrates are made up of many monosaccharides. Nucleic acid, which is found in our DNA and RNA, is made up of nitrogenous base and a pentose sugar. All right. It contains a nitrogenous base. It may be adenine, guanine, thymine, or cytosine. In case of RNA, instead of thymine, we have uracil. Rest all three are same. And a pentose sugar. And lipids. Lipids are nothing but fats. Lipids or fats are made up of fatty acids and glycerol. All right. So when the thing is that these are the bigger molecules made up of these things. So if they are made up of these things, when they are digested, when they are they are broken down. So when they are broken down, they will be broken down into small units जिससे वो बनते हैं. ठीक है? Proteins are made up of amino acids. So whenever proteins are digested, proteins will give you amino acids. Carbohydrates are made up of monosaccharides. Whenever carbohydrates are broken down, they will give you monosaccharides. When nucleic acids are broken down, they will give you a nitrogenous base and a pentose sugar, because the nucleic acids are made up of nitrogenous bases and pentose sugar. And lipids or fats, they are made up of fatty acids and glycerol. When you break down lipids, lipids give you fatty acids and glycerol. So the correct sequence is A4, B3, C1, D2. So A4, B3, C1, D2. Answer is option D. Now if you look here, A is 4, B is 3. Now look carefully. There is only one option in the question which has A4 and B3. So basically, if you figure out the first two only, you don't have to waste your time on the rest. Immediately answer मिल जाएगा. So use such kind of presence of mind tricks in the exam. ठीक है? Elimination use करो. The next question is, which one of the following statements is not correct? Option A, all proteins are enzymes. Option B, mostly enzymes are proteins. Option C, all fats are energy rich compounds. Option D, glucose is a common carbohydrate. देखो, mostly enzymes are proteins. It's enzymes जितने भी होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोटीन ही होते हैं. बट क्या ये जरूरी है कि सारे प्रोटीन एंजाइम है? नो. The statement we can arrive at is all enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. सारे एंजाइम प्रोटीन है, बट सारे प्रोटीन एंजाइम का काम करते हैं क्या? नहीं करते. ठीक है. ऑल फैट्स आर एनर्जी रिच कंपाउंड. यस, क्योंकि फैट्स में एनर्जी बहुत होता है, इसलिए फैट्स को डाइजेस्ट करना भी सबसे मुश्किल होता है. और अगर आप अच्छे से फैट ज्यादा खाओगे और भागदौड़ नहीं करते हो तो फैट डाइजेस्ट नहीं होता, आप मोटे हो जाते हो, चर्बी चढ़ जाती है बॉडी में. ग्लूकोज इज अ कॉमन कार्बोहाइड्रेट. यस, ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट एंड इट इज वेरी कॉमन. ठीक है. तो करेक्ट आंसर क्या है? विच इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन ए, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, इज नॉट करेक्ट. इट इज द रॉन्ग आंसर.
तो आवर आंसर इज नॉट करेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, रॉन्ग है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, these are correct answer. Next question, if by an unknown accident the acid secreting cells of stomach wall of an individual are damaged, digestion which one of the following biomolecule will be affected to a greater extent. अब हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होती है, गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन व्हाट, म्यूकस, पेप्सिनोजेन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब पेप्सिनोजेन एक्चुअली पेप्सिन बोल के एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म को कहा जाता है पेप्सिनोजेन. ठीक है, अब पेप्सिनोजेन को अगर एक्टिव होकर पेप्सिन बनना है, देन उसको एसिडिक पीएच चाहिए, आसपास एसिड चाहिए उसको, तो वो एसिडिक पीएच देने के लिए ही स्टमक साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है. अब तुम कहोगे सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक जल सकता है? नहीं, वो जो म्यूकस भी निकल रहा है जूस में, म्यूकस एक फ्लूइड हो टाइप का, एक सेमी सॉलिड टाइप का एक स्लाइमी चीज होता है, तो स्टमक के वॉल्स पे चिपक जाता है, एंड इट प्रिवेंट्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम डैमेजिंग द वॉल्स. एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? वो बेसिकली पेप्सिन को हेल्प कर रहा है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए. पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन डाइजेस्ट करता है. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजेन को हेल्प कर रहा है कि वो पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बन जाए, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दे. अब अगर इसके वॉल्स इफेक्ट हो गए हैं, ठीक है, तो अब स्टमक में डाइजेशन हो रहा है प्रोटीन का, अगर स्टमक के वॉल्स इफेक्ट हो गए हैं, ठीक है, तो स्टमक में जो चीज डाइजेस्ट होता है उसके डाइजेशन में इश्यू आ जाएगा. लिपिड और कार्बोहाइड्रेट स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होते, बस प्रोटीन होता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोटीन्स ओनली. इफ द स्टमक इज हार्म, द digestion of proteins will become affected. The next question is, in the human digestive system, which among the following is the role of the pancreas? देखो, pancreas जो होता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है. एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब वो एंजाइम्स को, हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है, ब्लड के अंदर. और एक्सोक्राइन मतलब वो ब्लड के बाहर खाली जगह में रिलीज करता है उसको, आउटसाइड ब्लड. और एंडोक्राइन मतलब इट इज रिलीज इनसाइड द ब्लड. ठीक है, तो पैनक्रियास इज बोथ. पैनक्रियास का एंडोक्राइन काम ये होता है कि पैनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करता है ब्लड के अंदर, हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने के. ठीक है, जिसका पैनक्रियास में इंसुलिन में प्रॉब्लम हो जाता है, उसका शुगर बढ़ जाता है, उसको डायबिटीज हो जाता है. अब और एक्सोक्राइन काम पैनक्रियास का ये है कि डाइजेशन के टाइम पैनक्रियास हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज करता है some digestive juices. This is known as pancreatic juices because it's coming out of pancreas. And pancreatic juices contains a lot of enzymes to digest proteins, carbohydrates and fats. Proteins के लिए it secretes proteases, fats which are lipids. उनको digest करने के लिए pancreas releases lipases, and to digest carbohydrates it releases amylase. ठीक है, तो the correct answer is option C, secretion of lipase, amylase and protease. Option C. The next question, consider the following statements and say which of them are correct. Carbohydrates are the only source of energy to humans. No. Even fats are a source of energy to humans. Proteins are also a source of energy to humans. Carbohydrates सिर्फ चावल ही खाते हो गया, दाल, चिकन, एग्स, बटर, चीज सभी खाते हैं हम, है ना. So this is wrong. Statement 1 is wrong. Statement 1 wrong मतलब A is wrong. Even option C is wrong. Statement 1 जहां भी है वो option wrong. तो आंसर या तो D है या तो B है. Let's come to statement number 2. Fats give maximum energy on oxidation as compared to other foods. Yes. फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है वो सबसे ज्यादा एनर्जी देता है दूसरे खाने से, बिकॉज फैट्स आर वेरी एनर्जी रिच, उनका डाइजेशन बहुत मुश्किल है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, only second statement, only 2 is correct. Now the next question, kidney secretes an enzyme which changes plasma protein angiotensinogen into angiotensin. What is that enzyme? Options are renin, nitrogenase, hydrolase and monooxygenase. ये आंसर आप लोग मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन बिलो that which is the correct option to this question. ठीक है, I hope this was a useful session for all of you. आपको
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन फिजियोलॉजी का है। आपको एक आइडिया हो गया होगा कि कैसे टाइप का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या क्या आपको पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई रियली होप इट वाज अ हेल्पफुल सेशन, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी प्रिपरेशन, जय हिंद।